स्टूडेंट्स हम आज देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। तो यू हैव टू फर्स्ट कंपेयर इट विद dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और फिर आपको मिलेगा द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q। देन यू विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, और उसके बाद आप पहले ये निकाल देना इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if, एंड देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 over here. So we will write here comparing with the linear differential equation form dy by dx plus py is equals to q. तो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो that is 1. So we can say that the value of p is equal to 1 and the value of q is equal to e raised to minus x. Okay, now we move on to the next step is to find out the if, that is the integrating factor. The formula for this is e integration of p dx. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, e लिखोगे integration of 1 dx. So 1 का integration with respect to x is 1 का integration is x. So if का value you got as e raised to x. Okay, now what we can do, we after finding out if, you need to find out q into if, integration of q into if with respect to dx. So q का value is e raised to minus x, right? E raised to minus x, and if का value is e raised to x. So this is pretty simple. E raised to minus x and plus x will become e raised to 0, and e raised to 0 will become integration of 1, and integration of 1 will be x. So we can say that the integration of q into if dx is equal to x. Okay, so now we can say that we need to find the solution of the equation. So we can say that therefore the differential equation is, so the formula is y into if is equal to integration of q into if dx plus c. ओके, तो y into if, y ऐसे ही रहेगा, if की जगह पे you have to put e raised to x is equal to q into if का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला, that you are getting as x, and then plus c. y e raised to x is equal to x plus c, इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, and then you will write is the general solution, is the general solution. dy by dx plus py equals to q. ओके, y का कोएफिशिएंट फिलहाल कुछ नहीं, तो ये 1 और नीचे x है. सो वी कैन से द वैल्यू फॉर p इज 1 अपॉन x, एंड द वैल्यू फॉर q विल बी, ये पूरा जो भी इक्वल टू के ये साइड है, सो दैट इज x क्यूब माइनस 3. सो this is the value of p and q. Now we move on to the next step is to find out if. if का formula you know that e raised to integration of p dx. So this will be e integration of p. p का इंटीग्रेशन, p की जगह पे आपको लिखना है 1 upon x, and as you know integration of 1 upon x is log x. Okay, and one more rule is that exponential and log function will get cancelled, so you get the if का value as x. e और log cancel हो जाएगा, if will be x. Now you need to find out the value for q into if. So we'll find out q into if with respect to dx. So q का value is x cube minus 3, x cube minus 3, and if का value is over here, that is x. So first thing what you do, you just multiply this x cube into x. X cube into x will be x raised to 4, and minus 3 into x will be 3x. Now you take the integration, x raised to 4 का integration will be x raised to 5 minus 5, 3 will be as it is, and x का integration will be x raised to 2 upon 2. So that is the value we are getting for q into if with respect to dx. So we'll put this inside the box, and now therefore the general solution, now you'll find out the general solution, that is integration, y into if is equal to integration of q into if dx plus c. So y will be as it is. In place of if का value है x, integration of this you can copy from here, that is x raised to 5 upon 5 minus 3x square upon 2 plus c. लेते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक सम लेते हैं, dy by dx, y sec x को हम sec x into y भी लिख सकते हैं, so sec x into y, so that it becomes in the standard form. So the first step we will do over here, comparing with, so we'll write over here comparing with is equal to q. So p का value you get over here as sec x, and then q का value you got as tan x. Okay, so we got p and we got q. Now we are going to find out if, integrating factor. The formula for if is e integration of p with respect to dx. So यहाँ पर e integration of sec x, okay,
with respect to dx. So integration of sec x. What is integration of sec x? That is log sec x plus tan x. Remember that. Integration of sec x is log mod of sec x plus tan x. Okay. As you know, मैंने पहले भी बताया आपको, e और log क्या होते हैं? Cancel. So you're getting the value for if is equal to sec x plus tan x. Integration of q into if. So q का value we got over here as tan x. Integration of tan x, and if का value we got sec x plus tan x. Sec x plus tan x. Okay, so first we'll multiply sec x into tan x. So that will be sec x into tan x. And then you multiply tan x into tan x. That will be tan square x with respect to dx. Okay, so now what you can do, you can take separate integration. So it will be sec x tan x plus integration of tan square x. So sec x tan x का integration is, as you know, derivative of sec x is sec x tan x. So you can write here sec x, and tan x का derivative is nothing. So we have to substitute with tan x का identity, that is sec square x minus 1. Sec square x minus 1. So we'll keep it this sec x as it is. Sec square x का integration, जैसे कि आप जानते हो tan x का derivative sec square x, तो sec square x का integration will be tan x, and 1 का integration, ये 1 का integration यहाँ पर आ जाएगा x. So you got the answer for q into if with respect to dx. Okay, so we'll put this inside the box, and now we move on to the final solution. हमारा formula है y into if is equal to integration of q into if dx plus c. So y will be as it is. If का value you can see over here, sec x plus tan x. We put it inside the box, sec x plus tan x. इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ आपने यहां पर रखा है. सो q इंटू आई एफ को आप डायरेक्टली लिख सकते हो sec x plus tan x minus x plus c. Okay, now you can just put this inside the box. Solution of differential equation. ओके गाइस, तो आई होप ये आपको ये तीनों सम समझने आए हैं. तो ये था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1, और इस सम का मेन जो फोकस रहेगा कि यहाँ पर आप देखोगे एवरी सम विच एवर सम आई हैव डन, तो यहाँ पर dy by dx के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था. कैन यू सी dy by dx वाज सेपरेट ओवर हियर, एंड अगेन इन द सम नंबर 2 dy by dx के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं था, 5 6 7 अटैच उसको नहीं था. यहाँ पर भी dy by dx वाज अलोन, मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो कोएफिशिएंट इसका 1 था. तो एंड हियर आल्सो इन द सम नंबर 3 आल्सो यू कैन सी हियर आल्सो देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx. Okay, so this was the part 1. In the part number 2 I will show you अगर dy by dx के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. Until next time, please like, subscribe and share ASHRAF tutorials.